A 49-year-old woman who had fallen off a running local train in Mumbai after a robber snatched her phone has died at Sion hospital. Now, the victim we're talking about is Priyanka Khodake. She suffered serious head injuries and had lost consciousness after she fell on the railway platform. Now, doctors say that she battled for her life in the ICU for 4 days before breathing her last. The accused in this case, identified as Ramzan Khan, was arrested shortly after the incident and is presently in judicial custody. Shweta joins us live on the broadcast for more on this. Shweta, we understand that this man, the accused here, is a repeat offender and he has been booked previously in similar cases. Well, that's correct, Apeksha. You know, it's very unfortunate that such kind of incidents keep happening in Mumbai suburban train, which is known to be lifeline. And we do find out that during peak hours, it is flooded with commuters. Near about 40 lakh people daily make use of Mumbai local train. And this is the time where such kind of crime also takes place. And talking about this very unfortunate, incident which took place on Monday, the lady who is known as Priyanka Khodake, she battled for her life for 4 days being in ICU, but due to her severe head injuries, she breathed her last thing on Friday. And now we find out that Ramzan Khan, who is a repeat offender, was already booked in past 4 cases which are similar to this, robbing and snatching the mobile phone and the gold chains. Now when we tried speaking to late Priyanka Khodke's husband, he was very much upset, of course, for the fact that after knowing that Ramzan Khan is a repeat offender, no action was in fact taken against him on a serious manner. Now we see that there is one death and the husband is also grieving. At the same time, it is also known that despite having 4 serious offences against Ramzan Khan, he still moved, and this was the 5th time which took someone's life. And this was not somewhere at very night time. This happened actually around 7 p.m. on Monday when the lady was heading from Santa Cruz to her house in Badlapur. She had to change 2 trains. That's from Western to Central. That's a huge commute. In fact, any Mumbai can talk about it. It's more than 1.5 hours of travel. And during this time, this very unfortunate incident took place and the lady has lost her life, leaving the family behind with her 23-year-old son who was there at the hospital all those 4 days waiting and praying for mother to get recovered. But yes, the repeat offender Ramzan Khan was already booked, but no serious actions were awarded to him. But this is the time when even GRP should take, a strict look at these kind of situation which keeps happening. In fact, Apeksha, at this point of given time, this is also important to tell to our viewers that we find AC local trains now being operational, and these are just few of the rakes which are being operational now. But in coming days, there will be more 36 additional trains, that is AC local, would be added. When we tried finding out from the officials of railway that why the fare is high and AC are being brought up for public use, the first and foremost thing what they pointed out was these kind of offences. They said we do not want these kind of offences to take place, but as per the data and the survey what the officials have given us, that's more than 70 cases takes place like this, where there's there's no safety for the commuters. They just hang on the open doors, and such kind of serious offences takes place during peak hours. The offender can easily run away as they are habituated to commit such kind of crimes. Robbery, you talk about phone snatching, and in fact there are several tunnels. We can name those tunnels, one through Sion, the other one through Kalyan. There are several tunnels where commuters are specifically very much aware that there will be full of offenders would be there, because this is a heinous crime, as well as this entire nexus has been going on since years. Now we see that the lady has lost her life. GRP is also answerable. At the same time, they have booked, and this time the husband wants that there should be strict actions taken against the repeat offender Ramzan Khan.
You know, in fact, Shweta, the wife's husband is, raising very relevant questions. He's asking that because if this man was a repeat offender, how was he allowed on the security, railway premises? So, what is the railway police saying? What is the GRP, saying about passenger safety? About how did this man in the first place, how did he make it to the railway station? Apeksha, when we speak about Ramzan Khan, the particular man we are talking about this entire story, how he is a repeat offender, he was caught by the GRP within few minutes, I can say. It was not even, the police had to struggle a long for getting, hold of the particular culprit. It was within some time, within half an hour, in fact, he was with the GRP. It means that GRP knew that the person is habitual of committing such kind of crime, and he has been into robbery and phone snatching and everything. Absolutely. But despite that, yes, the question is this: how come he was still roaming free and he was still near the railway premises? Here we do understand in 1-2 cases they are generally given warnings. Even I have seen that they are generally given the warning, Right. and they are asked not to repeat the offense, or else they will face serious actions. But this time this was not once, twice, this was the 5th case. Already the person was booked 4 times for the similar cases. And here GRP stands unanswerable. They have no answer that why this person was still roaming freely. We tried connecting to the railway authorities also, but yes, the answer remained the question remains too much on the limelight, that so many things have happened, Apeksha, but nothing court decision or court action has been taken against the culprits. Right, Shweta, we'll keep coming back to you for the latest on this story. For now, thank you so much for joining us. In fact, we're also being joined by Subhash Gupta, President of the Railway Pravasi Sangh. Thank you so much for joining us. Now, we're seeing another, commuter has lost life. It's a case of robbery. And we're also seeing that this person, it's important to highlight here that this is the person who's involved is not it's a first-time crime. He's a repeat offender. 4 cases previously. And we still see that this man has once again managed to come and target another commuter. What does this tell you about passenger safety when it comes to railways in Mumbai? सुभाष गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आई, अभी आई। हाँ, सुनिए, एक्चुअली हाँ जी सर। आप ऐसा है कि अभी महामारी के लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार से सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे में महामारी के बाद जो है क्राइम बढ़ा है, निश्चित ही काफी चिंता की बात है। और ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जो है सेंट्रल रेलवे में दीवा स्टेशन के पास में चलती गाड़ी में एक महिला से जो है इस तरह से फोन स्कैटिंग का जो है घटना घटी थी, और उसमें भी वो महिला मर गई। और उसके बाद हमने जो है रेलवे के आरपीएफ और जीआरपी और रेलवे के अधिकारियों के साथ में हमने पैसेंजर एसोसिएशन की मीटिंग ली थी। और उसमें सच बताऊं तो वो मीटिंग के बाद में जो घटना, जो बातें हमें जो स्पष्ट हुआ, उसमें ये बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार जो उन्हें मदद करती थी, जो उन्हें जो क्राइम रोकने के लिए जो है जो अलग फोर्सेस देती थी, वो फोर्सेस उन्होंने बंद कर दिए। और आरपीएफ और जीआरपी के पास जो उनके पास जो मैन पावर है वो इतने कम है कि उतने कम मैन पावर में ये जो पूरी व्यवस्था है, जैसा रात को 8-6 बजे के बाद जो है हर महिला डब्बे में जो है एक कांस्टेबल जो है होना चाहिए, वो व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसी का ही कारण है कि इस तरह से क्राइम बढ़ा है। और इतना ही नहीं, हमें ऐसा लगता है कि लोगों को पुलिस का डर समाप्त हो गया है, और ये डर समाप्त होने की वजह से क्राइम बढ़ा है। और मुझे लगता है कि खाली रेलवे इसको आरोपित करने से बेहतर होगा कि राज्य सरकार ने और रेलवे ने मिलकर इसको किस प्रकार से रोका जाना चाहिए। इसके लिए दोनों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसा कभी मराठी में एक म्हण आहे की मुंबईच्या रेल्वे प्रवाशांना वारेवर सोडलेला आहे राज्य सरकार आणि रेल्वेने। इतकं क्राइम वाढला, इतना क्राइम बढ़ गया है। जो सरकार की है, ये दोनों ने मिलकर जो है मुंबई करो की जो सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
सुभाष जी, लेकिन बात तो फिर वही एक तरीके से गोल घूम के वहीं आ जाती है जहां हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं पैसेंजर सेफ्टी के बारे में, रॉबरीज के बारे में, ये जो छोटे क्राइम्स होते हैं उसके बारे में। एक इंसिडेंट होता है, हम उसे मीडिया हाईलाइट करती है, गवर्नमेंट बोलती है, रेलवेज बोलेगी कि हाँ हम एक्शन लेंगे, टेम्परेरीली दे विल पुट कॉन्स्टेबल्स तो खैर फिर भी सिर्फ नाइट टाइम में होते हैं लेडीज के लिए कंपार्टमेंट में। ये इंसिडेंट तो दिन दहाड़े हुआ है, फिर एक घटना होगी, उसे मीडिया में हाईलाइट किया जाएगा, कुछ दिनों के लिए पीपल विल टॉक अबाउट इट, द गवर्नमेंट विल अश्योर एक्शन एंड देन इट्स ऑल गॉन अवे एंड देन द नेक्स्ट टाइम अराउंड वील सी समबडी हैज टू अनफॉर्चुनेटली डाई, दिस इंसिडेंट हैपेंस अगेन एंड हम वापस उसी एक तरीके से उस सर्कल में, उस चक्रव्यूह में घूमते ही रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता इट्स टाइम नाउ दैट द गवर्नमेंट टेक्स समथिंग लाइक अ स्ट्रिक्टर एक्शन दैट सेट्स अ प्रेसिडेंट कि ये चीजें अगर अगली बार से एक तरीके से होनी ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। आपका जो आपने कहा है कि ये खाली हम लोग खाना पूर्ति करते हैं, आपने आज टाइम्स नाउ ने उसको हाईलाइट किया हुआ है। हम जैसे पैसेंजर एसोसिएशन आगे बढ़ेंगे, हम लोग आरपीएफ जीआरपी के अधिकारियों से मिलेंगे, रेलवे के अधिकारियों से मिलेंगे, लेकिन कुल मिला के जो है 10 दिन के बाद आप भी चुप हम भी चुप और पुनः ये घटना घटेगी। बहुत सही आपने एक बात कही है। निश्चित ही इसको रेलवे ने और राज्य सरकार ने गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में एक पीआईएल डाला जाए और रेलवे को और राज्य सरकार को बाध्य किया जाए कि आप एक टाइमलाइन के अंदर जो है आप कब व्यवस्था बनाने वाले हैं। ऐसे ही महिला यात्रियों की मृत्यु होगी, हम लोग खड़े रहेंगे, उसके बाद 10 दिन के बाद फिर एक महिला यात्री की मृत्यु होगी, क्योंकि ये कंटिन्यू चालू है। जी। ये पहली घटना नहीं, मैंने पहले कहा ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। इस तरह से चलती गाड़ियों में विशेष करके महिलाओं के पर्स चोरी करना, महिलाओं के मोबाइल चोरी करना, उसके लिए उसको बचाने के लिए महिलाओं का दौड़ना और उनका मरना, ये पहली घटना नहीं है। लेकिन हर घटना के बाद हम जो है चिल्लाते हैं, हम लोग उसको ध्यान को आकृष्ट करते हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार जो है उस समय के लिए बताती है, हमें आश्वासन देती है कि निश्चित ही ये घटना हुई है, उसका हम इंक्वायरी करें। अरे इंक्वायरी के ऊपर इंक्वायरी और मीटिंग के ऊपर मीटिंग, इसके अलावा सही मायने में कुछ नहीं हो पाया है। ये सच है, ये फैक्ट है जी। और इसके लिए मुझे लगता है कि सभी ने मिलकर इसके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है। हम एज ए रेल यात्री परिषद करके इसको हम ठीक ढंग से उसको उठाएंगे और उसको अंत तक, ये व्यवस्था बनने तक जो है उसको राज्य सरकार और रेलवे को आग्रह करेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे और कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। और सुभाष जी, ये एक निश्चित तौर पे आपने जो कहा है बहुत सही कहा है कि खाली हम लोग जब तक आप और हम जो है उसको चिल्लाएंगे तब तक वो राज्य सरकार भी हाँ करेगी, रेलवे भी कहाँ करेगी, बाद में सब बैठ जाते हैं। लेकिन इसको विषय को बहुत गंभीरता से सभी ने लेने की आवश्यकता है। सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का एंड फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। All right, now we're shifting focus to the state of Odisha. Now, in order to cover syllabus in schools, Odisha has curtailed summer vacations. Now, students will get a holiday during summers only for 10 days instead of 50 days that they previously got. This decision has been taken to bridge the learning gap and covering the pending syllabus in schools.